morning students, welcome back to Science class of 7th. In our previous video, we had completed the chapter 16, that is, the name of the chapter is Water a Precious Resource. It was our activity chapter and I have discussed the exercises and question answer of the chapter, and most of the students have done it, but still some students haven't sent their work. So those who have not completed their work, please do it and send it to me for correction. Okay, so children, हमारा जो साइंस का सिलेबस है that is completed. In periodic test 1, the two chapters are nutrition in plants and nutrition in animals. वो हमारा complete हो गया है and I hope everybody have made the notes of the chapter. और जिन लोगों ने नहीं बनाया है, please start making it, because from the next month, that is coming October, you are going to have your term 1 examination. Okay, then in our term 1 syllabus we had completed the 3 chapters, that is chapter number 4 heat, chapter number 5 acid, bases and salts, and chapter number 10, that is respiration in organisms. After that we had completed the subject enrichment and activity chapters. So children, आपको सिर्फ 5 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसका नोट्स बनाना है. The chapters are chapter number 1 nutrition in plants, chapter number 2 nutrition in animals, chapter number 4 heat, chapter number 5 acid, bases and salts, and chapter number 10, that is respiration in organisms. These 5 chapters are going to come in your term 1 examination. So children, you have to prepare the notes of this chapter. Those who have not made, please start making the notes of the chapter and send it to me for correction, and start filling the book exercises too. Okay, so children, in chapter number 5 we have studied the neutralization reaction. ठीक है, तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 से एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो कि हमारा चैप्टर है, उससे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करवाऊंगी एंड आई विल एक्सप्लेन इट. ओके, सो टुडे वी विल बी डूइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्टिविटी. क्योंकि साइंस लैब हम जा नहीं सकते, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस एक्टिविटी थ्रू वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड in a better way what is neutralization reaction. Okay children, so before starting the activity, let's take a quick recap of what is neutralization reaction. See, neutralization जो word है वो neutralize word से आया. Neutralize means neutral, neither positive nor negative. Okay, so the reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water is called neutralization reaction. ऐसा reaction जिसमें कि एक acid और एक base दोनों आपस में react करते हैं और क्या बनाते हैं, salt and water. So such type of reaction is called as neutralization reaction. So when an acid reacts with a base, it forms salt and water. Okay, now अगर मुझे ये explain करना है, then हमें पता है NaOH. What is NaOH? That is sodium hydroxide. It's a, what it is? It's a base. Then when it reacts with HCl, that is hydrochloric acid. ये क्या है? Acid है. Okay. Then what it forms? NaCl. What is NaCl? Sodium chloride. That is salt. Common salt जो कि हम घर में खाते हैं. Plus H2O, that is water. Okay children. So when an acid reacts with a base or a base reacts with the acid, it forms salt and water. So today we will be learning about the neutralization reaction through an activity. Okay, let's start the activity of neutralization reaction. So first of all, we have to mention the activity name, then the observation, what we are observing, and the last one, the learning, क्या हमने learn किया. Okay, so let's start the activity. First of all, take a test tube and clean it using a clean dropper. Okay, then add 10 drops of hydrochloric acid carefully in the test tube. बहुत ही slowly हमें 10 drops hydrochloric acid का test tube में डालना है. Then
add 2 drops of phenolphthalein indicator solution. उसके बाद phenolphthalein indicator डालना है जो कि एक indicator है that tells whether a substance is acidic or basic. Now observe the color changes. phenolphthalein solution हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने के बाद आप ऑब्जर्व करिए कि कोई कलर चेंज हो रहा है कि नहीं. ओके, नाउ ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ phenolphthalein indicator solution. After that, add sodium hydroxide solution drop by drop to the test tube. उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो कि एक बेस है ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे and observe the change in the color of the solution. फिर ऑब्जर्व करिए कि कोई चेंज हो रहा है कि नहीं. आप देखेंगे पिंक कलर में चेंज हो रहा है. कीप एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल द कलर बिगिंस टू टर्न पिंक. और तब तक हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो कि एक बेस है ऐड करना है जब तक कि कलर पिंक ना हो जाए. वंस अगेन ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द सोल्यूशन मिक्सचर अंटिल द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब बिकम कलरलेस. और नाउ अब इस पिंक सोल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड तब तक डालते रहिए जब तक कि उसका कलर पिंक से कलरलेस ना हो जाए. ओके, तो क्या हमने ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी में? इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाइल एडिंग phenolphthalein solution. तो जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में phenolphthalein solution डाला तो कोई भी चेंज नहीं हुआ. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है जब डाला तो उसका कलर पिंक हो गया, चेंज हो गया. एसिड में जब हमने जो कि एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल रहे हैं जो कि एक बेस है, यू कैन सी केयरफुली द मिक्सचर चेंज टू पिंक. अब the pink color of the mixture solution becomes colorless by adding a few drops of hydrochloric acid. अब जो ये पिंक कलर हमें ऑब्जर्व हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से, अगर हम उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं तो वो अगेन क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है. तो वो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है. तो क्या हम लर्न करते हैं इस एक्टिविटी से? Finally, we learn that if we add excess base to acidic solution, excess base यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिडिक सोल्यूशन हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट कन्वर्ट्स टू बेस. तो अगर एक्सेस बेस डालेंगे एसिड में तो वो बेस में चेंज हो जाएगा और उसी तरह एसिड में डालेंगे तो वो बेस वाइस वर्सा हो जाएगा. वी ऑल्सो लर्न दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलीफाइड बाय एन एसिड. नलीफाइड मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है एसिड डालने पे. सो when acid and bases are mixed in definite proportion they give a neutral solution. इसीलिए जब हम एसिड और बेस को डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो वो क्या देते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन. ओके, सो दिस इज योर एक्टिविटी फॉर टुडे for the neutralization reaction. So children, I hope you all have understood the activity of neutralization reaction. So in this reaction, what the materials were required? हमें ज़रूरत पड़ी टेस्ट ट्यूब की, then test tube holder, then hydrochloric acid, then sodium hydroxide solution and phenolphthalein indicator. Okay, so 5 things we required. Okay, then इसमें जो phenolphthalein indicator है, it is a dye or indicator which determines whether a substance is acidic or basic in nature. So we know that phenolphthalein indicator is colorless in acidic solution and phenolphthalein indicator gives pink color in basic solution. तो इसीलिए जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में phenolphthalein indicator डाला तो कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ. The solution was colorless. and जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड solution में phenolphthalein indicator डाला तो कलर पिंक हो गया. ओके, सो बेटा this activity is given on page number 72 in your chapter. Okay, go through the activity so that you can understand it more well. So based on the activity, your today's homework is question number 1. Define neutralization reaction. Explain with an example. आपको neutralization reaction क्या होता है वो लिखना है. Explain with a example. Okay. Then question number 2.
what do you learn from this activity? After doing or watching this activity, what you have learned? तो आपको वो लिखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, what you have learned. हमने यही पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, जब एसिड और बेस एक साथ कंबाइन करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नलीफाइड यानी कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ठीक. देन थर्ड, नेम 3 indicators. You have to write the name of any 3 indicators. This you have already studied, so you can write it very easily. Then fourth one, which indicator is used to carry out neutralization reaction of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution? So this 4 question answers you have to do in your copy. Okay. So in our next upcoming video, I will be coming with another activity. Okay. So till that time, don't waste your time, study well and start learning the question answers. Okay. Thank you and have a great day.